25 રાજકોટ બંધના એલાનમાં સહકાર આપવા કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી સહિત સેવાદળના 100 જેટલા કાર્યકરો દ્વારા શિસ્તબદ્ધ રીતે મૌન રેલી યોજવામાં આવી હતી। સવારે સદર બજાર અને ધર્મેન્દ્ર રોડ પર વેપારીઓને અપીલ કરવા રૂપે નીકળ્યા હતા અને મૌન રેલી યોજી અગ્નિકાંડ પીડિતના પરિવારજનોને ન્યાય આપવા સૌ સાથે બંધમાં જોડાય તેવી અપીલ કરવામાં આવી હતી। રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવી છે। જો આપણે पच्चीस तारीखना राजकोट बंधना एलान लईने हवे गणतरीना कलाको बाकी है त्यारे रात दिवस अमारी आखी टीम मदद करी रही है। सेवादळना संगठनना मित्रों राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेशथी आवीने राजकोटनी जनताने, राजकोटना वेपारीओने, दुकानदारोने हाथ जोड़ीने विनंती करी रह्या छे कि फरी आपणा राजकोटमां के गुजरातमां आવું न बने एना माटे बधाए साथे मळी सहकार आपवो जोईए अने राजकोट बंधना एलानने सफल बनावવું જોઈએ। अमने पूरेपूरी खातरी है जे प्रमाणे लोकोनो रिस्पोन्स है राजकोट 100% बंध रहेशे अने एसआईटीना रिपोर्टनी विरुद्धमां पण आम जनतामां बहु नाराजगी है। एसआईटीने कुलडीमां गोळ भागवानुं काम कर्युं छे। खूब मोटी संख्यामां पेट्रोलनो जथ्थो होवा छतां फक्त 20 लीटर पेट्रोल बताव्युं छे। एनाथी पण लोको अवगत है, अवेर है। एना बधाना कारणे पोलीस इन्वेस्टिगेशनमां जे लोचा मारी रही है राज्यनी पोलीसने सरकार एनी पण लोकोमां खूब नाराजगी है अने 25 तारीखे राजकोट बंध रहेशे। गईकाले झूम कॉलमां राहुल गांधी साथे पीड़ित परिवारोनी वात थई एना पछी एमनो पण कॉन्फिडन्स वध्यो छे, अमारो पण आत्मविश्वास वध्यो छे। आखी कांग्रेस पार्टीने राहुलजी सूचना आपी छे कि पूरेपूरी ताकत लगाई पीड़ितोने न्याय न मळे त्यां सुधी बधाए लड़वानुं छे। आजे सांजे अथवा आवतीकाले अमारा प्रदेश प्रमुख माननीय शक्तिसिंह गोहिल और आखू कांग्रेस पार्टीનું नेतृत्व એ રાજકોટમાં ઉતરવાનું છે। રાજકોટ શહેરને અગ્નિકાંડના પીડિતો માટે ફરી આવી ઘટના ન